वी वर एट अप्लाई फंक्शन। ठीक है, मैं क्विकली इसको रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। So we took this pandas data and so we created a data frame using a dictionary. Okay, and the data dictionary would मतलब कुछ इस तरीके से दिख रही थी। Then we took this group by function. ये नहीं देखते पहले। Then we said कि this is the df information. Okay, data frame का information. It looks like this. Then हमने सबसे पहले देखा group by के अंदर group groups function. So what it will do, whichever values you have, if those values occurred many of the times, it will give you index in the list. ठीक है, ये list है, right? लिस्ट में दे दीजिए और टोटल दिस इज है डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी ऑफ की एंड वैल्यूज, की एंड वैल्यू। ओके, द सिमिलर फंक्शन is done by n groups, but what it gives you unique number of values from the group, whichever group you take. Okay, then second we have seen size function in the group by. This also works the same. Okay, so you will say data frame or group by and you will specify the column name. Okay, and you will say dot size. When you say dot size, it will tell you the values, how many times they have occurred. So Anuj occurred 3 times, right? Like this, you can see Anuj first, Anuj second, and Anuj third. Similarly, other values also occurred, like Prince occurred 2 times, Jay 2 times, and so on. Then we have seen sort by function. Okay, so default group by is already sorted, right? The default value of group by is already sorted, but uh, what we see is just a second. So default is already sorted. So if you write this or not, you will get the similar type of answer. Okay. So you just said df.group by, उसके अंदर you mentioned which column you wanted to group by. Okay, which column you wanted to group by, and uh, then you said sort equals this true. So this will get sorted by age. Okay, by age. So whatever age we have, and we simply said उसका mean दे दो, age का mean दे दो. Okay, so you can also set sort equals to false, so it will forget sorting. Okay, it will forget about sorting and all. Then we have also seen some statistical functions on the group by. So first we saw mean, second we saw median. Okay, you can keep this or delete this. Okay, doesn't matter. Then we saw median. Again, additionally we reset index, added another function on top of it. So you can see this is one function. On top of it we added one more functionality. On top of it we added another functionality. On top of it we added another functionality. Okay, so this is how you can add multiple things in a in a single like on a single data frame. So this is actually one of the advantage on the in the data frame, that you can do multiple operations. You can do multiple operations on a single um, in a single operation actually. So we saw summation, we saw minimum values, maximum values. We also saw count, so it will give you count of the functions, and then we saw ag, which is a brother of aggregate. Okay, so what it will do is it will open all the numpy functions for the data frame. So let's say you group by name by age. Okay, you have this, and you just said aggregate numpy dot sum. So इस जो age का सारे sum मिल जाएगा. Let's say Anuj, there are 3 Anuj,
तो तीनों का ही सम मिल गया हमें. Then you can do multiple operations also like numpy dot sum, mean, median, standard deviation, variance, covariance, and so on. ठीक है, minimum value, maximum value, 70% quartiles and all. So we will also see those in the future. Then we saw aggregate, so it does the same work. Okay, qualification पे हमने sum डाल दिया, तो we got like, ठीक है. पर इसने क्या कर दिया, बाकी के सारे ही कॉलम्स ले लिए जो कि, एंड देन फॉर सम आल्सो इट्स द सेम राइट. बस हमने इसके ऊपर रीसेट इंडेक्स लगा दिया. सो यहाँ पर जो ऐसे ग्रुप्स में आ गए थे, दैट नाउ कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल कॉलम रो, सिंगल रो. देन वी हैव सीन अप्लाई फंक्शन, जो कि हम आज भी कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, अप्लाई फंक्शन में हमने क्या देखा, that we have this data frame and we create any custom function. Okay, so हमने ये addition नाम से एक function generate किया, right? And then we saw, then what we did is हमने df dot age ले लिया, age column, उसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया addition function. Okay, addition function. Now एज के अंदर की जितने भी वैल्यूज है वो ऐड होकर, मतलब हर एक के ऊपर 2 ऐड होकर, यू कैन सी हर एक के ऊपर 2 ऐड हुआ. तो अर्लियर जय का एज 27 था, नाउ जय का एज 29, राइट. सो सिमिलरली यू कैन आल्सो डिफाइन एनी कस्टम फंक्शन, लेट्स से अपर केस. तो आपने वो क्वालिफिकेशन पे चले जाए, क्वालिफिकेशन डॉट अप्लाई अपर केस, तो ये सारे अपर केस हो गए, right. Then you ran this swap case, then you ran this get power में हमने क्या कर दिया, np dot square values, and किस पे चला दिया, स्कोर पे. तो स्कोर में सबका पावर कितना हो गया, 3 मे बी, नहीं स्क्वायर हो गया, सारी वैल्यू स्क्वायर में हो गई, स्क्वायर आ गई. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है. Is everything clear till now? Clear till now, so that we can, इस यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या हमको कि अरे ये समझ में नहीं आया हमें? Is there any challenges? छोटे मोटे? क्लियर है, क्लियर है. Okay, so that now we can go ahead and understand same apply function. ठीक है, apply function on using lambda. ठीक है, using lambda. So so what do I mean by lambda? So हमने lambda function सीखा था पहले, राइट. लेट्स से अभी मैं सारे सेल्स रन कर देता हूँ, यहीं पे उसको रन करते हैं ये चीज़ों को. ठीक है, तो नाउ वी हैव दिस df. ठीक है, df कुछ इस तरीके से हमारी डेटा फ्रेम दिख रही है. ओके, डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से दिख रही है. नाउ लेट्स टेक अ कॉलम क्वालिफिकेशन. ठीक है, df के अंदर आई विल ऐड दिस क्वालिफिकेशन. आई वांट टू चेंज दिस कॉलम. ठीक है, तो आई विल से df डॉट क्वालिफिकेशन डॉट अप्लाई. सो हियर नाउ लैम्डा एक शॉर्ट हैंड फंक्शन है, तो यू डोंट हैव टू, अर्लियर हम क्या कर रहे थे, अर्लियर हम कुछ इस तरीके से फंक्शन डेवलप कर रहे थे एंड देन उसको अप्लाई कर रहे थे, राइट, लाइक दिस. बट सिंस lambda is a shorthand function, you can write here itself like lambda. Okay, lambda will say जो मेरा let's say x मेरा एक वैल्यू है, x मीनिंग इसके अंदर का एक वेरिएबल. ठीक है, lambda फंक्शन अगर याद आ रहा हो तो x डॉट उसकी सारी वैल्यूज अपर केस में चेंज कर दो. ठीक है, इसके अंदर की सारी वैल्यूज अपर केस में चेंज कर. So if I run this, you can see qualification सारे ही अपर केस में चले गए. ऑलरेडी अपर केस में थे, कुछ और अपर केस करते हैं, एड्रेस करते हैं.
wherein this address will be in a uppercase, right? Address will be in a uppercase. Okay, okay. Can anyone uh, और एक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल लेंगे, ठीक है? So let's say I have this column df dot कौन सा कॉलम है df dot, let's say मेरे पास instead of column I will say df dot group by, ठीक है? df dot group by में कर रहा हूँ let's say name का, ठीक है? df group by में कर रहा हूँ let's say name का, उसके ऊपर आई वांट टू अप्लाई समथिंग ऑन एज, ठीक है? एंड आई विल से डॉट अप्लाई, ठीक है? डॉट अप्लाई, और इसके अंदर आई वांटेड टू सेट लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन। तो अगेन एक्स इज द वेरिएबल, और एक्स को मैं जो भी एज है उसके अंदर 100 साल ऐड करना चाहता हूँ, सबकी उम्र 100 से बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है? एवरीवन्स एज आई वांट टू इंक्रीज बाय एज पे अप्लाई होगा गाइस ये, ठीक है? और कॉलम होगा ग्रुप बाय अनुज, अनुज यानी सॉरी नेम, ठीक है? तो यू कैन सी अप्लाई हुआ है क्या, नहीं हुआ है? अप्लाई तो नहीं हुआ है। So if I say dot reset index, okay, and I drop the other columns, sticky index, एक्सेस है ही नहीं ना। Anyways, एज में तो ऐड नहीं हुआ गाइस, am I missing some syntax यहाँ पर? इसको I think this is also right because ground basis में ही है। Maybe I'm making some mistake here or somewhere, ठीक है? अभी के लिए like age should have get added 100 in every age column, it should have get 100। तो इसको मैं देखता हूँ फिर से, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रुप बाई का ही ट्राई करते हैं। अगर वो चल गया तो शायद तो आइडिया आ जाएगा मुझे। लेट्स से मैं अभी डायरेक्ट नेम पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? I'll just directly apply on a name and let me say lambda x value semicolon colon x माइनस x का मीन कर देना, ऐसे कर कुछ मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, रन दिस, नहीं कुछ तो कन्वर्ट, कुछ नॉट कन्वर्ट नेम पे नहीं हो रहा है ना, पेज पे होना चाहिए, बट वैल्यू ही नहीं चेंज हो रही है। एनीवेज, ग्रुप बाई को अभी हम ड्रॉप ही कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है? इसके ऊपर अलग से मेरे को देख के आना, देखता हूँ मैं। इट जनरली वर्क्स। तो हम क्या करते हैं, ग्रुप बाई कर रहे हैं नेम को और उसके अंदर एज पकड़ते हैं, उस पर हर एक एज पे हम ऑपरेशंस चलाते हैं, ठीक है? और एज ऑफ नाउ फॉर सम रीजन इट इज नॉट वर्किंग। चलो इसी पे चलते हैं अभी के लिए, ठीक है? सो नाउ इफ आई सी df dot df score, df score dot apply, okay? df score dot apply, and if I say lambda x colon x, and
के अंदर हम 1000 वैल्यूज ऐड कर देते हैं। इफ वी ऐड, तो हर एक स्कोर के अंदर 1000 वैल्यूज विल गेट एडेड। ठीक है, 1000 वैल्यूज विल गेट एडेड। या फिर आप माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, वट एवर यू थिंक वी कैन ऐड। लाइक जो भी लैम्डा फंक्शन का रिक्वायरमेंट रहेगा वो टाइम पे, एनी पर्टिकुलर कॉलम पे अगर आपको कुछ करना है, सो यू कैन डू इट। ठीक है, यू कैन डू इट एनी पर्टिकुलर कॉलम। अगर और क्या कर सकते हैं, इनको टाइटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? टाइटल, कैन एनीवन कन्वर्ट दिस एड्रेस into a title? Can anyone convert this address into a title? Simply एड्रेस को टाइटल में कन्वर्ट कर पाएंगे क्या हम? सिंटैक्स इज हियर, लेट मी जस्ट गिव यू द सिंटैक्स। मतलब पूरा फंक्शन ही एक दे देता हूँ। ट्राई टू डू इट। अगर आपको समझ में आया तो थोड़ा मतलब आ जाएगा, बाकी वो ग्रुप बाय वाला अभी के लिए छोड़ दो। इट इज, इट शुड वर्क हियर, बट फील नहीं कर रहा है दोनों। आप ट्राई करना एक बार ये VS कोड में, VS कोड में शायद ये सिमिलर सा चल जाए। एड्रेस को टाइटल में कन्वर्ट करना है, तो एड्रेस एक्स डॉट टाइटल, दिस लुक्स राइट। यस, ठीक है, तो सारी एड्रेस टाइटल्स में कन्वर्ट हो गए हमारे, राइट? तो दिस वन वाज गुड, दिस वन वाज गुड। ठीक है, so lambda was this much only. ठीक है, lambda was this much only. जो ग्रुप बाय का है, that should also have work, बट नहीं कर रहे। बट lambda के अंदर you can do anything। ठीक है, lambda के अंदर you can do anything, anything, या इसके अंदर कुछ भी चला सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी, जो भी ऑपरेशन करना है आपको, ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, स्क्वायर निकाल दो, है ना, और उसका क्यूब रूट निकालो, whatever you can do, whatever you can do using this lambda function। ठीक है, so it gives you the authority कि आप इसके साथ इसमें अलग अलग टाइप के फंक्शंस आप रन कर सकते हो। ओके, सो मूविंग अहेड ऑन अ डे 8, आई थिंक मेरे को ये ना नोटबुक क्रिएट नहीं करने देगा। आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस। तो अच्छा ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अब इस अलग ड्राइव में, दिस इज माय अनदर में, लेट्स डिजिट connect pandas each, and it selection। okay, so now क्या पढ़ने वाले हैं हम? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। उसके पहले एक डेटा फ्रेम इंपोर्ट कर लेते हैं। लेट मी जस्ट गेट यू अ डेटा फ्रेम। कौन सा करो, कौन सा करो, साइज। लेट मी जस्ट गेट यू दिस टाइटैनिक का। ठीक है, एक और डेटा फ्रेम है, ये मैं ऐड कर दूंगा गिटहब पे। ठीक है, डाउनलोड। सो लेट्स ऐड दिस डेटा फ्रेम हियर। अपलोड में जाएंगे, टाइटैनिक को अपलोड करेंगे, इट विल बी हियर, and we will say import pandas as pd। okay, import numpy, num
and thank you. Let's run this. हमारी डेटा फ्रेम आई नहीं है. Why? अगर आती नहीं है तो we will have to create one. अब आ गई. ठीक है, सही है. तो ये टेम्पररी स्पेस है. ठीक है, ये टेम्पररी स्पेस है. तो ये अगर आप रिफ्रेश करोगे तो चले जाएगा. तो ऑलवेज रिमेम्बर व्हेनेवर यू कोड इन द गिट लैब, ठीक है, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा. ठीक है, तो गिट लैब नहीं, गिट कोलैब, कोलैब के अंदर. तो दिस इज आवर डेटा फ्रेम. ठीक है, दिस इज आवर डेटा फ्रेम. पैसेंजर एवडी सर्वाइवल समथिंग, मतलब टाइटनिंग में जो हुआ था ना हादसा, तो वो सब है कि पैसेंजर का ये आईडीज है. फिर कितने सर्वाइव्ड हुए. सर्वाइव्ड मीनिंग जीरो मतलब नहीं हुआ सर्वाइव. वन मीनिंग सर्वाइव्ड हो गया. टी क्लास मतलब हाई क्लास की कौन से थे. लाइक ये थ्री क्लास था, ये थर्ड क्लास था, फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास था, सो ऑन. उनका नाम क्या था, जेंडर क्या है, एज क्या है, ये समथिंग है, पार्ट्स क्या है, टिकट का क्या है, फेयर कितने था डॉलर्स में, कैबिन कौन सा था, है ना बात. तो इसके ऊपर नैन वैल्यूज भी है कुछ. ठीक है, so for whenever you start working on a data set, you must understand the data set. So how do we understand the data set? The very first is we say df.info, we run this. Okay, so we get to know okay, these many columns are there, row records are there. Actually these many records are there. Then these are integers, some are objects, some are floats, right? There are these many null values, right? Right, not a number values. Uh, just no null values. Yeah, है null values. Let's let's get to know about it later. So like this, okay. इस तरीके से आपको कितने डेटा टाइप्स है इसके अंदर सब चीजें पता चल जाएगी. So let's say you can also get the unique values from the data set. हमने ये देखा था, right? Let's say df dot जेंडर रहेगा, जेंडर है, जेंडर का जी क्या करें, df dot जेंडर, एंड उसको आप कह सकते हैं कि गेट मी यूनिक वैल्यूज. ठीक है, गेट मी यूनिक वैल्यूज. तो आपको उसके अंदर कितने यूनिक वैल्यूज है आपको मिल जाएगी. या फिर आप वैल्यू काउंट भी निकाल सकते हैं कि भाई इसके अंदर ये जो टाइटैनिक थी इसके अंदर जेंडर कितने थे, मतलब मेल कितने थे और फीमेल कितने थे. तो विल गेट कि मेल कुछ ऑलमोस्ट 600 से, और ये 300 के आसपास मेल फीमेल थी. सो यू कैन ऑल्सो लाइक इस तरीके से आप निकाल सकते हैं वैल्यू. तो ये हमने पढ़ा था. एक और एग्जांपल लेट मी गिव यू. फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा, आपको किसी ने कहा कि मेल में कितने सर्वाइवल थे, राइट. मेल जो थे उसके अंदर कितने सर्वाइवल थे. तो हम कहेंगे df.loc और मेल, राइट. जेंडर के अंदर सर्वाइवल कितने थे. ठीक है, एक जेंडर के अंदर सर्वाइवल कितने थे. तो ग्रुप आई करके भी निकाल सकते हैं, एलओसी से निकाल के देखते हैं. टाइल से जेंडर df डॉट जेंडर इक्वल्स टू मेल, जेंडर इक्वल्स टू मेल, राइट. या फिर इस तरीके से df के अंदर जो जेंडर है वो मेल ले लो. ठीक है, एंड लेट्स से और एक कंडीशन लगेगी, राइट. और एक कंडीशन लगेगी. टाइल से एंड df के अंदर
सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड ले लो। सर्वाइव्ड का क्या रहेगा, वैल्यू इक्वल्स टू 1। तो इसका मीनिंग क्या रहा, जेंडर मेल ले लेना और सर्वाइव्ड में 1 ले लेना, ठीक है। और अब मैंने एंड ऑपरेटर यूज करा है गाइस, ठीक है। एंड ऑपरेटर मीनिंग दोनों भी वैल्यूज ट्रू चाहिए, दोनों भी वैल्यूज ट्रू चाहिए। इफ आई रन दिस I will get an error. Why I will get error? Unsupported list. के अंदर तो दिया है डॉट शेप 0 डॉट शेप 0। ओके वेट, हमने शायद यहाँ गलती कर दी। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि अंडरस्टैंडिंग में कि कहाँ पर आपको लिस्ट लगानी है, कहाँ पर लगाना है। बट क्या हो रहा है कि ऐसे क्यों आ रहा है। So we should only get number। अच्छा सॉरी, इतने लोग सर्वाइव हुए हैं, ठीक है, इतने लोग सर्वाइव हुए हैं। कितने हैं, समवेयर अराउंड 111, ठीक है, समवेयर अराउंड 111। ये 13th वाला सर्वाइव हुआ है जो मेल था, 17th वाला सर्वाइव हुआ उनका नाम था राइस एंड विलियम्स एंड लीसली, राइट, लाइक दिस। हमने क्या क्या किया, वी अप्लाइड अ फिल्टर ऑन हियर, okay, we applied a filter on here, pdf.gender equals to male दे देना, df.survived equals to 1 दे देना। we can also apply a shape here, dot shape equals to dot shape equals to for example 0। ये भी स्क्वायर में जाएगा शायद, यस। विल गेट द एग्जैक्ट नंबर कि कितने थे, बस इतने थे, कौन कौन थे, तो बस ये चला दो, ठीक है, ये दिस विल रन। तो अभी अगर सिमिलर तरीके से अगर इफ आई वांटेड टू फाइंड अ फीमेल, कितने फीमेल हुए थी सर्वाइव, तो आई विल जस्ट सिंपली रन दिस एंड आई विल गेट ओके दीज मेनी फीमेल्स लाइक 233 फीमेल्स वर सर्वाइव, राइट, लाइक मेल से 2 गुना ज्यादा। आप देख सकते हो, नाउ यू विल अंडरस्टैंड द डेटा सेट। टोटल मेल कितने थे, समथिंग अराउंड 577, फीमेल बहुत कम थी। तो मोस्ट ऑफ द फीमेल सर्वाइव हुई है 233, मोस्ट ऑफ द फीमेल हैज बीन सर्वाइव, ठीक है। और अगर हम बोले कितने नहीं सर्वाइव हुए हैं, तो 80 फीमेल नहीं सर्वाइव हुई है, वेयर एज इफ आई जस्ट रन, मेल कितने सर्वाइव नहीं हुए, 465, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा डेटा सेट आगे पीछे लाइक उसको तोड़ मोड़ के बिल्कुल ही, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, कि भाई इसके अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके। so this is how you can run। तो कुछ इस तरीके से आपको आप डेटा सेट को देख सकते हैं, now you can see। so let's learn about today's very first function is d type function। तो हमने ये स्ट्रिंग में लिस्ट में देखा है, राइट, स्ट्रिंग में देखा है, ओके, स्ट्रिंग में देखा है। तो लेट्स चेक फॉर df डॉट जेंडर का डी टाइप क्या है। तो इट इज यूज टू चेक द डी टाइप, मतलब डेटा टाइप ऑफ जेंडर क्या है, ओ मीनिंग ऑब्जेक्ट, ओके, ओ मीनिंग ऑब्जेक्ट। वर्क होता है नहीं, df डॉट जेंडर का डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओके। यहाँ पे भी पता चल जाता है हमें इनको, जो जेंडर है उसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओके, ऑब्जेक्ट है। so this is how you can check any particular like let's say if I say survived df dot
सर्वाइव डॉट, इसका डी टाइप दे देना। ऐसे बोल दिया तो ये बोल देगा कि ये इंटीजर है 64। ओके, इंटीजर है 64। तो कुछ इस तरीके से आप उनका डेटा टाइप नो कर सकते हैं, मतलब जान सकते हैं। ठीक है, तो देयर इज वन मोर फंक्शन, उससे आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्स द फंक्शन नेम इज एज टाइप। एज टाइप फंक्शन। ठीक है, वो कैसे कर सकते हो? लेट्स से सर्वाइव ले लेते हैं। ठीक है, df डॉट सर्वाइव, राइट, ठीक है, df डॉट सर्वाइव इक्वल्स टू df डॉट सर्वाइव। ठीक है, और आप बोल दो बस एज टाइप। ठीक है, एज टाइप क्या टाइप चाहिए आपको? फॉर एग्जांपल आपको चाहिए फ्लोट। ठीक है, यू वांट फ्लोट, यू रन दिस, इफ यू रन df, so you can see जो भी मेरे सर्वाइवर थे, those have been changed to those have been changed to float. Okay, earlier it was क्या था? अभी अगर मैं df डॉट डी टाइप चला दूं तो ये फ्लोट आ जाएगा। earlier it was integer. Okay, earlier it was integer. तो कुछ इस तरीके से आप ये चेंज कर सकते हो गाइस। क्या चेंज कर सकते हो? इनका टाइप चेंज कर सकते हो यूजिंग विच फंक्शन एज टाइप। तो डी टाइप फंक्शन से आपको पता चलेगा उसका टाइप क्या है। एज टाइप फंक्शन से आपको पता चलेगा उसको चेंज कैसे करना है, किस किस वैल्यूज में आपको चेंज करना है। ओके, किस वैल्यूज में आपको चेंज करना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर अंटिल नाउ? इज इट क्लियर अंटिल नाउ? इज इट क्लियर? अब तक क्या क्या देखा हमने? सिंपली सबसे पहले तो डेटा को समझा हमने, कैसा है, इसके अंदर क्या है फंक्शंस। देन हमने यूनिक फंक्शन प्रैक्टिस किया, वैल्यू काउंट प्रैक्टिस किया। वी आल्सो सॉ सम एलओसी लोकेशन फंक्शन, कितने सर्वाइव हुए, कितने सर्वाइव नहीं हुए, फीमेल मेल। वी स्टार्टेड विद डी टाइप, बस ये टाइप दे देगा। एंड अप्लाई फंक्शन आप चेंज कर सकते हो वट एवर द वैल्यूज यू हैव। ठीक है, वट एवर द वैल्यू यू हैव। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। किया किया, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू एक डेटा फ्रेम तैयार करते हैं। लेट्स try and create a data frame. Let's say we have a gf data frame dft. Okay, so I will say pd dot data frame. Okay, pd dot data frame, and let's create using a dictionary. So let's say I have a column of a, column of a. I think you have to get column of a I have. ठीक है, I will np dot random words ले लेता हूँ। रैंडम के अंदर रैंड इंट ले लेता हूँ। लेट्स से मुझे चाहिए 10 से लेकर 20 तक वैल्यू, और टोटल वैल्यू मुझे 5 ही दे देना। ठीक है, एंड उसके बाद आई से सेकेंड वैल्यू, ये की होगा राइट, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है। एंड नाउ दिस आई नीड टू ऐड सम वैल्यूज के अंदर। सो लेट मी जस्ट डायरेक्टली टेक सम वैल्यूज, जैसे 10 20 30 40। अच्छा, सही वैल्यू है। ठीक है, तो इफ आई जस्ट क्रिएट, इफ आई जस्ट आस्क फॉर दिस डेटा फ्रेम, कुछ इस तरीके से ये डेटा फ्रेम, कॉलम ए कॉलम बी, इसके अंदर रैंडम वैल्यू है, इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू जो हमने डाली। ओके, एक्चुअल वैल्यू है। लेट्स से हम इसके अंदर और एक और कॉलम डालते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलम सी डाल देते हैं। ठीक है, कॉलम सी के अंदर हम क्या कर देंगे, जेन ऐसा कुछ डाल देते हैं। ठीक है, जेन। So now if you ask for the FPs,
कुछ इस तरीके से मिलेगा, जेन हम ये काइंड ऑफ प्रैक्टिस भी मैं छोटे मोटे फंक्शंस करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि हमने बहुत पहले सीखा था। तो here also above also I was just practicing with you your, ठीक है, अलग अलग फंक्शन। और इसके अंदर और एक आप कॉलम ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल क्या कर सकते हो, जैसे डीएफटी के अंदर मुझे और एक कॉलम ऐड कर दो डी, ठीक है, डी नाम से कॉलम ऐड कर दो। आ, और वो उसके अंदर फॉर एग्जांपल कॉलम ए प्लस डीएफटी के अंदर कॉलम बी डाल दो, बस कुछ ऐसे। तो क्या होगा, कॉलम ए एंड बी का एडिशन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। So you can straight away add the columns, right? You can straight away add the columns, okay? And इसका फिर अगर इसका d type as मतलब ये अभी integer रहेगा, right? Integer रहेगा, so you can change their as type also. You can change those things into the let's say और क्या कर सकते हो, let's say you have this EFT के अंदर d है, right? And what you said is DFT का as type चेंज करना सिंपली, ठीक है। what you will say as type और उसको चेंज कर दो स्ट्रिंग में, ठीक है, उसको चेंज कर दो स्ट्रिंग में। if you ask for DFT you'll get this, अभी अभी ये स्ट्रिंग में चेंज हो गई, although you cannot really see, but if you ask DFT dot क्या था हमारा वैल्यू D type, then you'll get ऑब्जेक्ट आ रहा है, हाँ, बिकॉज पांडास डेटा फ्रेम में स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है यहाँ पर, मतलब मोस्टली वो ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है, इट डजंट रिटर्न स्ट्रिंग एज डायरेक्ट, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, लेट्स से आई वांट टू चेंज दिस टू, आई वांट टू ऐड समथिंग लाइक परसेंटेज, if I run this I should get इनका परसेंटेज, ठीक है, 21 प्लस परसेंटेज, 32 प्लस परसेंटेज एंड सो ऑन, okay. So like this many of the operations you can run, okay, many of the operation you can run, okay. So let's take the same data frame and start understanding another function, that is insert, okay, that is insert। इंसर्ट क्या करेगा, इट विल ऐड अ वैल्यू, हमने ये फिर से हमने ये numpy में पढ़ा था, राइट, वी हैव सीन द सेम थिंग इन द numpy एक्सेल, ओके। ओके, सो numpy में भी हम क्या कर रहे थे कि वी वर गिविंग द इंडेक्स, मतलब जो लोकेशन, अभी यहाँ पर भी हम लोकेशन देंगे, विल गिव द कॉलम नेम, वी विल गिव द कॉलम वैल्यू, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम देंगे, लेट मी जस्ट राइट द सिंटैक्स क्या रहेगा, लेट्स से यू हैव अ डेटा फ्रेम, उसके अंदर आप बोलोगे इंसर्ट, ठीक है, उसके अंदर आप बोलोगे इंसर्ट एंड यू विल पास अ लोकेशन index, okay, we'll pass the location index, we'll pass column name, okay, and then you will pass column values, okay, column name, column value, so this will be your syntax, okay, this will be your syntax। so let's try and understand कि हम ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास DFT है, अभी के लिए ये डेटा फ्रेम है फॉर एग्जांपल हमारे पास, ठीक है। DFT एक डेटा फ्रेम है हमारे पास, तो इफ आई से DFT डॉट insert, okay, DFT dot insert, I will say first location पे, okay, first location पे just add x column, first location पे what I will say, location first पे column name दे दिया मैंने x and I need to give the values now, okay, I need to give the value,
तो फॉर एग्जांपल वैल्यूज, मतलब ये कॉलम ए पे यहाँ पर दिस इज जीरो, दिस इज फर्स्ट, यहाँ पर वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो values would be somewhere around, let's say, negative values, we can negative 11, negative 22, negative 33, negative 34, negative 55, okay, negative 55. And if I say DFT, now you can see new column has been added and it looks like this. New column has been added and it looks like this. Okay, simple है, सिंपल है, राइट। हमने क्या किया, एक कॉलम में ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया। Okay, we have just added a column. Okay, someone will say, what if have we just want to pass one value? Okay, what if we want to pass one value? Let's say DST के अंदर I want to pass one value. So I will say location. Location for example मैं बोल देता हूँ 0 1 2 3 4 5 लोकेशन बोल देता हूँ, ठीक है। लोकेशन 5, कॉलम नेम ले लो this, okay, and value ले लेना for example 10,000. If I ask for this, I will get Z column added at the end, and each value will be 10,000. Okay, each value will be 10,000, right? 10,000. So in this way, you can do many of the things on this. Okay, many of the things like जितने भी अगर आपको columns add करने हैं, you can add using insert function. Okay, you can add using insert function. Alright, alright. Can anyone add any column to this data frame? DFT data frame. So can anyone add any column quickly, guys? I will get the idea कि आपको idea आया है, समझ में आया है. From people from the YouTube, can anyone add any column? Can anyone add any column? You get some more time. Okay, क्या मेरा नहीं क्या? Any column name would be okay. Any length. Someone says V column इसके अंदर 11 at location 1. Okay, at location 1. I will say insert location 1 पे V column, इसके अंदर value 11. So 11 11 11 will get added. Okay, 11 11 11 will get added. So we have like this. So we can kind of have change the positions of this columns also. तो वो कैसे कर सकते हैं? You will say DFT, ठीक है। इसके अंदर you will mention the columns name. Let's say मुझे first A चाहिए, ठीक है। Then मुझे B चाहिए, then मुझे C चाहिए, then मुझे D चाहिए, I will need D, ठीक है। इसके बाद हो गया हमारा ABCD हो गया। Then I want V column, ठीक है। Then I want X column, right X है हमारे पास। Then I want Z column, ठीक है। Then I want Z column. तो हमने क्या कर दिया, ABCD and then V कर दिया, then XZ कर दिया, ठीक है। So now if I run this, you can see कुछ इस तरीके से वो sort हो गया. So you can specify your column names like this. You can specify your column names like this.
and those column names will rearrange itself. Okay, so V यहाँ पर आ गया, X यहाँ पर आ गया, Z यहाँ पर आ गया. Okay, so this is also one of the way you can move the location of your column. Okay, move the locations of your column. और इसी को फिर आप मतलब हमने ट्रांसपोज भी सीखा था कैसे, इस तरीके से. तो आपके रोज कॉलम बन जाएंगे, कॉलम रोज बन जाएंगे, राइट. तो लाइक दिस यू कैन ऐड डिफरेंट कॉलम, ट्रांसफर कर लो और उनको रीअरेंज कर दो. ठीक है, यू कैन डू मतलब मीनिंग अगर इनको भी आपको लाइक रोज को इन रोज को अगर आपको चेंज करना हो, ठीक है. तो इफ आई नाउ सिंपली रन लाइक दिस डीएफटी के अंदर आई विल से मुझे चाहिए फर्स्ट चाहिए फॉर एग्जांपल 2 चाहिए मुझे फर्स्ट, देन मुझे चाहिए 0, देन मुझे चाहिए 1, देन मुझे चाहिए 3, देन मुझे चाहिए 4. So now your columns will जो अरे यार 0 1 2 3 index in the columns are not maybe कुछ इस तरीके से करना रहेगा हमें. ठीक है. So moral of the story is you can rearrange your columns and maybe this will also work. नहीं हो रहा है. D type हमें चेक करना होगा columns का. तो अच्छा वेट गाइस, इसको सेव करना होगा हमें df equals to. So now this is our df. Like this. Okay, like this. So this is how you can also rearrange the rows also. Previously ये रो थे हमारे, राइट. अब ये कॉलम्स हो गए और अभी इसी df को अगर आप इसके ऊपर ट्रांसफर चल जाएगा, चल गया. So now your columns have also been changed. Sorry, rows have also been changed. तो कुछ इस तरीके से हम रोज एंड कॉलम्स को रीअरेंज कर सकते हैं. ओके, तो इस टॉपिक को कहेंगे हम अरेंजिंग रोज एंड कॉलम्स एज पर नीड. एज पर नीड इसलिए कहा मैंने कि यू आर नॉट डायरेक्टली सॉर्टिंग देम. ठीक है, तो हमने सॉर्ट फंक्शन देखा है. उसके अंदर you can directly sort the values by columns and rows. तो वो सारी columns and rows move हो जाती है. ओके, बट here you can do as per your rows. ठीक है, तो इस तरीके से you just sorted the rows and you just sorted the columns. Okay, you just sorted the rows and you sorted the columns. Alright, alright. I hope this one is also clear because that was uh, simply changing the values. Okay, changing the. Now, if there is any doubt, okay, let's someone try this. Good. 1 2 3 4 5 6 values नहीं चलेगा भाई, 6 values नहीं चलेगा. अभी हमारा डीएफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है, राइट. इसको मैं df1 से कन्वर्ट कर देता हूँ. रन दिस. मेरा df1 कुछ इस तरीके से दिख रहा है. ओके, एंड नाउ इफ आई ऐड df1 अंदर ये, तो इट विल गिव मी एरर. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 6 वैल्यूज हो गए, ये 5 ही वैल्यूज है. नाउ इफ आई रन दिस आई विल गेट p column added at location 1. I will get p column added at location 1. So now this is okay. Okay. So one more thing we have learned is we need same column length. Same column length. ठीक है. So someone will say कि रो में कैसे ऐड करें, रो में कैसे ऐड करें. तो आगे उसको ट्रांसपोज कर दो. ठीक है, ट्रांसपोज कर दो, फिर वो रोज आ जाएगी ऊपर, रोज में वैल्यूज डाल दो और फिर से ट्रांसपोज कर दो. ठीक है, तो आपको कॉलम्स मिल जाएंगे फिर से, उसके अंदर रोज के अंदर वैल्यूज ऐड हो जाएगी. राइट, सिंपल है. तो
using insert function, you can also add in values into the rows. Okay, rows also. Alright. So if anyone want any, what happens if we add at location 17? Location 17. Let's try and check. So what if I add at location 17? Although we don't have location 17, so it will say P. Okay, we already P1. Okay, P1. Okay, index is out of bound. Okay, index is out of bound. So this another thing will happen. Okay. Uh, तो रन कर देता हूँ पी विल ऑलरेडी एग्जिस्ट ये तो गलत हो गया पी वन कर देता हूँ एंड वो वाला एग्जांपल भी रख देता हूँ आपका फॉर यू टू अंडरस्टैंड पी वन ऑलरेडी एग्जिस्ट पी टू कर दो फिर एंड दिस इज व्हाट हैपन ठीक है दिस विल व्हाट हैपन सो यू कैन नियर बाई लाइक इसके बाहर का जैसे लेट्स से ये कितना था जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट so you can add at location 9. Okay, you can add at location 9. You can add at location 9. Okay, so we are almost about time, but let's understand one more function, that is rename. Okay, if you still have some more question, let me know. Okay, people from YouTube. Okay, no questions. If you have any questions, let me know. Okay, so let's quickly understand a rename function. Okay, तो हमारी डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से दिख रही है अभी के लिए. Okay, मैं इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ डी एफ एक्स के अंदर मैं इसको स्टोर कर देता हूँ डी एफ एक्स माई डी एफ एक्स लुक्स लाइक दिस नाउ ओके so now if I want to rename अरे इसमें तो काफी कुछ चेंज कर दिया रीनेम कॉलम्स इक्वल्स टू जीरो बट मेरे कॉलम्स है ही नहीं वो anyway rename ठीक है rename so what I will say for example I need to you either say this columns जैसे मैंने सजेस्ट करा if you don't mention that is also fine ठीक है if you don't mention that is also fine but you need to take this curly braces for example मेरा जो column A है this is my column A उसको change कर दो small a में okay small a में and now if I say dfx what will happen let's check what dfx ये क्या हो गई let's try place equals to 2 and you at least okay you have to mention the axis क्या रहेगा हमारा 1 रहेगा okay axis क्या रहेगा हमारा 1 रहेगा so now cannot specify both axis and any axis or columns so already हमने columns mention कर दिया है तो it should work yes okay if you have already mentioned the columns you don't have to mention the axis okay so now your column has changed to जो आपका capital A था अभी small a हो गया है okay small a हो गया one more example लेते हैं without column okay without column so I will say rename okay rename instead of that I will directly say मेरा जो B column B नहीं B column है उसको चेंज कर दो विराट नाम से ओके उसको चेंज कर दो विराट नाम से एक्सेस इक्वल्स टू 0 डाल दो एक्सेस इक्वल्स टू 0 डाल दो आई थिंक इन प्लेस भी लग रहा है इन प्लेस इक्वल्स टू वी डाल दो इन प्लेस इक्वल्स टू डाल दो नाउ इफ यू आस्क you will get v get changed to virat okay so यहाँ पर हमने क्या किया था we directly specify the columns okay but when you not specify you can specify axis equals to 0 okay you can specify axis equals to 0 okay axis equals to so can anyone help me quickly to these rename these rows also okay help me with renaming the rows rename the
row, 3 rows. ठीक है, you get, so मतलब you get 1 year. ठीक है, आपके सामने यहाँ पर रखा है, people from the YouTube you guys can also try. ओके, किस तरीके से कर सकते हैं? 3 seconds. Anyone? रोज सारी ही रोज चेंज कर दो या एक दो रोज चेंज करके भी चलेगा. ठीक है, क्विकली. ओके, समवन राइट, ट्रांसपोज कर दिया. ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं, इफ यू ऑलरेडी से एक्सेस. ओके, let me explain you this. bfx dot rename and this 2 will get changed to Raj. Impress equals to access equals to 0 अगर आपने बोल दिया तो it will directly consider what, it will directly consider the rows. rows. So 2 will get changed to Raj. Okay, 2 will get changed to Raj. Can also change 1 to 1 to Simran. Okay, one value to Simran. Then you can also change 3 to राज. सिमरन और राज की और कौन सा था? हीर. हीर. हाँ, सबसे पहले हीर रहेगी. Then you can change 4 to Raj. ठीक है, आई थिंक 0 हमने ले लिया. And 0 to sum. ये क्यों ऐसे कर? 0 to sum. No. So now if you run, you will get all the values changed. Movie, Simran, Raj, Veer, Rajan. Okay, like this. So you can change directly if you directly say access equals to 0. या फिर यहाँ पर अगर आप rows equals to, let me try. I have not tried this. If you say rows equals to this, you don't mention the access. Movie 1, Simran 1, 1, 1. Rows is not accepted. Okay. Rows से तो नहीं हो रहा है. Rows से तो नहीं हो रहा है. So let's delete this one. Understand like this. So if you simply say x is equals to 0, you will get rows changed. Okay, rows. Alright. So let's quickly revise what we have learned. सबसे पहले हमने सीखा, ये नहीं सीखा, ये सीखा. इसमें क्या सीखा हमने? अप्लाई लैम्डा फंक्शन. अप्लाई फंक्शन विथ लैम्डा. इसके अंदर हमने लैम्डास वैल्यू चला दी. ठीक है, अप्लाई के अंदर हमने लैम्डास वैल्यू वी हैव रन. ओके, लैम्डास का शॉर्ट हैंड फंक्शन दैट वी हैव लर्न. नेक्स्ट हमने देखा, वी इंपोर्टेड दिस data set of Titanic. We checked its information. This looks like this. It has these many records and these many data types that it had. We saw unique function.
we saw value count. What a unique function will do? Whatever unique values that any column has will return. Okay. Then we saw value counts function will return the unique values, but also return how many values are those in that particular column. Okay. Then we have seen how many survivor from like male survivor were there using lock function. So there were only triple one male survivors. How many male who did not survive? Okay, so these many. How many female did not survive? Only 80. How many female survived? Lot of females survived. Okay, then we saw D type. Okay, we saw D type. D type function will give you the data type of whatever the column you mentioned, and you can change that data type using as type function. Okay, using as type function. Then we created one more data frame using a random function and using a dictionary. We added another column. We added another column of adding another column. We modified the another column using percentage. Okay. Then we learn insert function. Insert function में क्या देना होता है? आपको location देना होता है, column name देना होता है, column value. Okay. This is location, this is column name, and this is column values. Okay. इसके अंदर हमने देखा कि only 5 values needs to be added. जितने भी rows रहेंगे उतनी ही value you can add. You can simply, if you simply say only one value, it will get added into all the rows. Okay. Like this. Then you can rearrange your columns. You can rearrange your rows also, but you need to transpose those rows first. Okay, transpose the data frame, then rearrange it, and then फिर से जैसे ही आप इसको rearrange कर देते हो, फिर से उसको transpose कर दो. You will get your uh, data frame back. Then we have seen we need the same column length. Okay, if we add extra column, so we will get the error. Then we have seen this rename function. जिसके अंदर you can rename any column's name. Okay, any column's name. So if you say axis 1, so it will change the column name. If you say axis 0, so it will say row ka name. Okay, row ka name. So any question, guys? Any question? Okay, someone also tried. Someone also tried. Any questions, guys? Open for questions. Any questions? Any questions? df dot dfx dfx dot rename and इसको ये curly braces में डाल दो in plus equals to 2 1 तो है नहीं अभी हमारे पास तो लेट्स से मूवी को हम चेंज कर देते हैं dfx मूवी को हमने चेंज कर दिया रूपी साइन में ओके मूवी को हमने चेंज कर दिया रूपी साइन में राइट so this is how we can do. Okay, any questions, guys? Any questions? If you have any questions, let me know. People from the YouTube, if you have questions you want to ask, you can also ask. ये हमारा WhatsApp का link है. You can join the WhatsApp group and notes. I will upload these notes on this GitHub. GitHub का link भी description में मिल जाएगा. People who are on the WhatsApp group, I will add this link. I think I have added only day 7 है ना? Day 7. So day 7 का भी I think update हुआ है आखिरी में. So I will add this day 7 and day 8 का notes in this pandas वाला folder में. ठीक है. So make sure you practice, guys. अभी pandas में ही 8 lectures हो गए. ठीक है. pandas में ही 8 lectures हो गए and I am hoping कि अभी हमने कुछ और 2 lectures एटलीस्ट लगेंगे. 2 lectures. ठीक है. या एक लेक्चर में भी कल भी कर सकते हैं बट वही है कि थोड़ा सा व्हाट हैपेंड इन प्लेस इक्वल्स टू फॉल्स. लेट्स ट्राई. लेट्स ट्राई.
So if I say movie equals to one, okay, and what I don't see, अरे हवा कर दे बंद कर false. If I mention false, dfx dfx, so it will not, it has not changed actually. अच्छा मूवी तो था ही नहीं यहाँ पे, मूवी तो था ही, but anyway it did not change. So whenever I feel face some problems, I go here and मैं just change कर देता हूँ, in place equals to true कर देता हूँ, so it understands कि कहाँ पर जाना है. मोस्टली तो यही होता है कि एक्सिस, मोस्टली जब हम एक्सिस मेंशन करते हैं ना, मोस्टली जब भी हम एक्सिस मेंशन करते हैं तो इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू मेंशन करना थोड़ा जरूरी होता है. तो वो क्यों होता है, वाई इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू इज यूज्ड इन कैंडस. So I also don't know, तो मैं बस चैट जीपीटी को पूछ रहा हूँ. The what does in place equals to true means when you call pandas drop या sort by या fill in it can either return a new data frame or series, modify that directly without returning a new project. In place equals. Okay. df5 equals to 5 df5. Okay. Now in place equals to true हम जब भी रखेंगे, what will happen is कि जो अभी आपकी पेरेंट डेटा फ्रेम है जिस पे भी ऊपर आप काम कर रहे हो वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, दैट विल डायरेक्टली चेंज. बट व्हेन यू से इन प्लेस इक्वल्स टू फॉल्स, तो व्हाट विल हैपन, इसमें चेंज नहीं होगा. जो आपका पेरेंट डेटा फ्रेम, अभी भी मैं अगर पेरेंट डेटा फ्रेम मांग लूँ तो इट विल बी सेम. ठीक है, ऑल्दो इसके ऊपर मैंने चला दिया, बट मैंने क्या बोल दिया, इन प्लेस इक्वल्स टू फॉल्स. सो व्हाट विल हैपन, इसके अंदर चेंज नहीं होगा. आपको एक नया डेटा फ्रेम देना पड़ेगा, उसके अंदर वैल्यू डालना होगा, एंड नाउ दैट वैल्यू विल गेट शो. ठीक है, सो इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू will change your parent data frame. Why people use this in place or equals to true or false is, the main reason is आपके पास लेट से एक इम्पॉर्टेंट डेटा फ्रेम है और उसको आपको चेंज नहीं करना है, तो यू विल टेक वन मोर अनदर डेटा फ्रेम और उसके अंदर यू वांट टू मेक चेंजेस, क्योंकि आपको बस देखना है कि अरे ये होकर क्या होगा. तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये रीनेम कर दिया तो मुझे फिर से, अगर मुझे प्रीवियस नेम चाहिए रहेगा तो शायद नहीं मिल पाएगा. ओके, फॉर दोज रीजन people using plus equals to true or false. Okay, true or false. Any more questions? Then why implement, then why we implement. Okay, okay, done. Cool. Okay, all right. If there are more questions, let me know, or if you have understood everything. If you have understood everything, cool. Type in the comments. Okay, all right. Okay, guys. Then see you tomorrow. Morning batch 8 a.m. evening batch 9:30. Okay. मिलते हैं. Alright. Alright.